Hi, हाय दिस इज सौरभ फ्रॉम दिल्ली. एक्चुअली मेरा सवाल दो खूबसूरत लेडीज जो यहाँ पे बैठी राजा साहब की रानी से है. Uh, हमने बहुत सारी नॉर्थ इंडिया पे फिल्म्स देखी है जो अभी हॉरर आई हैं. भूल भुलैया 3 हो गई, चाहे स्त्री 2 हो गई, ऐसी बहुत सारी है. उसमें फैंटेसीज भी बहुत सारी थी. लेकिन राजा साहब ऐसी कौन सी फैंटेसी लेके आ रहा है, अगर आप दो दो बता पाए, जो हमें फैंटेसाइज कर पाएगी या ऑडियंस को फैंटेसाइज कर पाएगी. हमने जो आज तक की हॉरर कॉमेडीज़ देखी है उनका मेन जॉनरा एक हॉरर कॉमेडी रहा है. लेकिन इसमें ना एक फैंटेसी लैंड क्रिएट किया गया है. जो भी हॉरर कॉमेडीज़ हमने देखी है वो एक रियलिस्टिक स्पेस में, जैसे आपने भूल भुलैया बोला, वो भी एक रियलिस्टिक महल में बनी है. उसमें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसमें भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बट द वर्ल्ड दैट वी क्रिएट इज़ फैंटास्टिकल. सो जब हम कोई भी ऑडियंस स्क्रीन देखने जाता है, थिएटर में जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी भूल के कुछ नया देखें. एंड आप देश के कोई भी कोने में जा सकते हो लेकिन आप फैंटेसी नहीं जी सकते हो वहाँ पे. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स. प्लस इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनराज. देयर इज ऑल्सो रोमांस, देयर इज एक्शन, देयर इज हॉरर एंड कॉमेडी एज यू मैंशन. टू मी आई थिंक इट्स द फैंटास्टिकल अप्रोच. एंड if I'm being very honest, to me it's also the fact that Prabhas sir is in it, you know. So I think that also makes it stand out so much more. Yeah, Maruti sir, from Karnataka, Please, Divya. Eastern she newspaper answered reporter. it. She answered it. So it is the fantasy element. I think that's the most exciting part. If you see in the trailer, there's like a big monster, right? So I think that's going to be super exciting, and the climax is something that you should look forward to. So I think you'll enjoy that. Thank you. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾರುತಿ ಸರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. It's a pan India, ma'am. But ಓಕೆ, Yeah. ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂಡ್ ಸಲಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾನರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಲ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿತ್ತು? ಅಂದರೆ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಪಾತ್ರನ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? Actually, ma'am, before Bahubali, before he used to do these kind of comedy characters. He played lot of comedy characters. After Bahubali, actually, in Pan India, no one can see in this kind of characterization. Now I want to show if Prabhas sir, if he play comedy role, how it will be. That too, his stature. For we are looking for one different genre that is called this fantasy, horror fantasy. You can see tomorrow, ma'am. It's like a Disney films. I have animation background. I came from the 2D animation. That is why I enjoyed this film when I'm making, and you'll also will enjoy, I think. मारुति सर. Yeah. हेलो, मेरा सवाल ஒரு நிமிஷம். मारुति सर, कैन आई? yeah, sir, you can. Solong sir. थैंक यू सो मच. मारुति साहब, प्रसाद साहब, मेरा सवाल आपसे है. Yesterday, day before yesterday, we launched a song and it is terrific. The response is really mind blowing. नाचे song. 3 इतनी दिग्गज कलाकार उसके अंदर मौजूद, प्रभास सर मौजूद, और उसके बाद जिस तरह से कोरियोग्राफ करा गया वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग है. मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम प्रभास सर की बात करते हैं, द बज़ अराउंड द फिल्म इज़ वेरी पॉजिटिव. कितने करोड़ की फिल्म को ओपनिंग लेनी चाहिए? जस्ट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब प्रसाद सर, जस्ट वांटेड टू नो व्हाट ओपनिंग यू आर आइंग एट. That is Prasad sir's call, I think. I cannot tell that figures and all. So we globally will definitely go more than 100 crores in the day one. My question here, Maruti ji, ikkada. Yes. Yeah. My question, sir, Bappi Lahiri sir's song adi, asal disco dancer, one of the super duper hits ఆ టైంలో. సో why was it a deliberate thing ki Bappi Lahiri sir దే ఏదైనా రీమిక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది? ఎందుకంటే ఆయనది అన్ని సూపర్ హిట్సే ఉన్నాయి. అంత ఆలోచించలేదండి. అంటే నాకు ప్రభాస్ సార్కి చాలా ఇష్టమైన పాట అది. అందుకని అది పెట్టుకుందామని అనుకున్నాం. అదైతే మా సినిమాకు కూడా కరెక్ట్గా న్యాయం జరుగుద్ది అనిపించింది థీమ్ వైజు. ఆ ప్రాసెస్లో పెట్టింది సాంగ్.
ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే సినిమా స్టోరీ స్క్రాచ్గా ఉన్నప్పటి దగ్గర నుంచే మేము ఈ సాంగ్ పెడితే బాగుంటుంది అనుకున్నాం. అది బాగా నిజంగా తమ్మన్ చాలా అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు, అంటే ట్రెండీగా ఇచ్చాడు. అది 3 days బిఫోర్ రిలీజ్ చేసినా సరే అది చాలా చాలా దూరం వెళ్ళింది, బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. థ్యాంక్ యూ. And My one question last to two questions. Nidhi and Riddhi, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే both of you have really enjoyed if you see the dancing and all. So they say this is a media party. So was it a party already for you before this conference? Can both of you answer? Nidhi? Yeah, I mean the song, I always love dancing, as you know. I think that's been a very, very big part of my journey. And Nache Nache was amazing fun to perform. So was Sahana Sahana. Raja Yuvraja is a beautiful song. So I love all the songs in the film. But talking about the party, yes, Nache Nache was a party.